Welcome to the next lecture from Introductory Statistics. In the previous lecture, we have already started working on probability. So you must have understood then when we are trying to find probability, we are focusing on what is the number of outcomes which are favorable to the probability that has been asked for, and what are the total number of outcomes, right? So when we have to find these totals, we have to count. And here comes the most important thing in probability, the base with which you can work on probability, that is the counting techniques. So for a few lectures, we will be working on the counting techniques. Yes, we will be talking about permutations, combinations, etc. But just to build up the base today, let's take it very simple. So when various outcomes of an experiment are equally likely, the task is just to find probabilities by counting. Simply counting, and you will be able to get the required probability. Now, let's call capital N the number of outcomes in a sample space, and NA represents the number of outcomes in the event A. Probability of the event A is nothing but this NA upon N, right? The whole task is to find NA. Okay, if you have less outcomes in the sample itself, it will be a very simple game. Like, for example, you are talking about tossing a coin once. So there are two outcomes, out of which if A is heads, getting heads, 1/2. If A is getting tails, it's 1/2. Very easy, right? But when you have too many outcomes and many possibilities in an experiment, then sometimes it becomes a little difficult to create each outcome. That is why we should know certain rules of counting so that we can make this task as easy as possible for us. ऐसा ही एक rule है which is associated to ordered pairs. So let's take the simplest form possible to begin with, ordered pairs. अब यहाँ पर ordered pairs का क्या मतलब है? Ordered pairs, we understand in maths, ordered pairs are like x1 comma x2, two tuples, right? x1 comma x2, a comma b, ये सारे ordered pairs हैं. अब यहां पर इसका क्या मतलब होगा, ये समझते हैं. That suppose, you can at times have events that consist of ordered pairs as their outcomes, and we need to calculate the number of such possible ordered pairs. For example, say O1, O2, O3. These are certain objects in your experiment, and the event consists of the outcomes object 1, object 2 together as an ordered pair. Object 1, object 3 is a possibility together as an ordered pair. Object 2, object 3 together as an ordered pair. तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं, ये तीन अलग अलग ordered pairs हैं, right? So sometimes we need to calculate these number of outcomes as ordered pairs. अब इसका एक example लेते हैं. Suppose you are taking a business trip from Delhi to Mumbai, and then for leisure you are going to Goa. Okay. Up Delhi to Mumbai, you'll be flying using any airline. Mumbai to Goa, again, you'll be flying using any airline. Suppose it boils down to that there are 3 airlines you're considering. You're considering Vistara, you're considering Air India, you're considering SpiceJet. Okay. अब अगर मैं दिल्ली टू मुंबई जा रही हूं तो ये एक एयरलाइन लगेगी ना, A1, और मुंबई टू गोवा जा रही हूं तो दूसरी एयरलाइन लगेगी, राइट? आई वांट टू फिगर आउट, आई वांट टू सी द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आई हैव in case I have these three airlines that I wish to take from, okay, make use of. तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ये जो पॉसिबिलिटीज होंगी, आई एम लुकिंग फॉर 2 airlines at a time, right? So the possibilities will be in terms of
ऑर्डर्ड पेयर AI, AJ। वो ऑर्डर्ड पेयर अगर मान लीजिए ये V है, ये A है, ये S है, सो ऑर्डर्ड पेयर कुड बी VA, could be AV, could be AS, could be SA, it could be VS, SV. These are all ordered pairs that I am looking into. तो मेरे पास ऐसे ही ये ordered pairs calculate करके number of possibilities बन के आ जाएंगे कि these are the number of possibilities that I have. Okay, these are the combinations of the airlines that I can choose from. अब इसी को हमने प्रोपोजिशन कह दिया, समथिंग दैट वी प्रपोज, या फिर हमने एक रूल कह दिया. सो रूल ऑफ काउंटिंग क्या है ये? So the rule says that if the first element or object of an ordered pair can be selected in n1 ways. So you have n1 possibilities for the first object, and for each of these n1 objects या फिर n1 ways, the second element of the pair can be selected in n2 ways. The total number of pairs, that means, will be equal to n1 into n2. So there is a product rule, you can say, which is applied out here. Okay, you will multiply the number of ways for both. Okay, and you will get the total number of pairs. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को. पहला एग्जाम्पल, सपोज दैट यू आर रीमॉडलिंग योर हाउस. ओके, you're doing something, you're remodeling your house. Some remodeling requires services of both, say, plumbing and electrical contractors. In how many ways can the contractors be chosen if there are 12 plumbing and 9 electrical contractors available in the locality that you have probably shifted in, or whatever area you are looking into? Okay, so हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास कितने प्लम्बर्स हैं या फिर प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? P1, P2, so on and so forth till P12. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स कितने हैं? E1, E2 till E9. अब मान लीजिए आपने P1 को चूज किया. P1 को चूज करने के बाद आपके पास 9 ऑप्शंस हैं. 9 ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए. इसी तरीके से अगर आपने P2 को चूज कर लिया तो 9 ऑप्शंस हैं आपके पास इलेक्ट्रिशियन के लिए. ठीक है, तो या तो आप क्या करेंगे, एक एक P1, P2, P3 इन सब का केस लेके फिर सबको ऐड कर दोगे. ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, ये आपका केस 1 है कि जिसमें आपने P1 लिया, ये आपका केस 2 है, ऐसे ही करके आपके पास केस 12 तक आ जाएगा. और हर केस में क्या हो रहा है कि यू हैव 9 ऑप्शंस फॉर द इलेक्ट्रीशियन. तो आप 9 वेज से किसी को भी ले सकते हो, 9 वेज से किसी को भी ले सकते हो, 9 वेज से किसी को भी ले सकते हो. तो आपने इन केसेस को ऐड कर देना है टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप 12 टाइम्स 9 ले रहे हो, राइट? सो इसी चीज को आप मल्टीप्लीकेशन के साथ भी तो कह सकते हो ना, दैट दिस इज नंबर ऑफ प्लम्बर्स into number of electricians available in total. So 12 into 9. तो ये प्रोडक्ट रूल कह लो या मल्टीप्लिकेशन रूल कह लो, ये जो है रूल, ये सिंपल यही चीज है और कुछ नहीं है. इसी तरीके से दर्शाता है ये. आप केसेस को ऐड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप एक्चुअली, क्योंकि हर केस से आपको उतने ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, सो देयरफॉर यू कैन से द टोटल नंबर इज जस्ट n1 into n2 एंड दिस इज व्हाट इट इज. आपका यहां पर n1 12 है और n2 9 है एंड यू हैव योर आंसर. ओके, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए, सपोज यू हैव शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेलिटी, ओके, एंड यू आर लुकिंग फॉर वन डेंटिस्ट एंड वन जनरल फिजिशियन. आपको पता होना चाहिए ना, राइट? सो सपोज करिए इन योर 5 किलोमीटर रेडियस, suppose there are 4 physicians and 6 dentists available. How many options do you have in total? This time I will directly apply it. If I have 4 physicians, so I have physician multiplied by dentist
तो मैं इन चारों में से कोई भी फिजिशियन के पास जा सकती हूँ, ठीक है, एंड 6 में से किसी भी डेंटिस्ट के पास जा सकती हूँ, राइट। सो मैं कोई भी फिजिशियन चूज कर सकती हूँ, कोई भी डेंटिस्ट चूज कर सकती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, बट आई एम लुकिंग फॉर अ फिजिशियन एंड डेंटिस्ट टुगेदर, ठीक है। सो इन टोटल आई हैव 4 into 6, दैट इज 24 ऑप्शंस। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज इन द सेम सिचुएशन you want a physician and a dentist, but you want them at the same medical center. You don't want कि मैं एक बार यहाँ जाऊं एक बार यहाँ जाऊं, मैं एक ही मेडिकल सेंटर हो कोई जहां पे मुझे फिजिशियन भी मिल जाए और डेंटिस्ट भी मिल जाए. And suppose you know in that your area there are 2 such centers and each center has 2 physicians and 3 dentists. Each center has 2 physicians and 3 dentists. In how many ways can you choose a physician and a dentist from the same center? This time थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसको पूरी तरीके से देखते हैं। अब हमारे पास फिजिशियन है और डेंटिस्ट है। अभी भी आई वॉन्ट अ फिजिशियन, आई वॉन्ट टू चूज अ डेंटिस्ट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिशियन कॉमा डेंटिस्ट, योर ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके, दोनों चाहिए क्योंकि हमें, ओके। अब फिजिशियन ना, I have, for physician I can go to physician 1, I can go to physician 2, I can go to physician 3, I can go to physician 4. तो फिजिशियन के लिए ना मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। दिया हुआ है हमें कि इन टोटल हमारे पास 4 फिजिशियंस है, राइट। सो फॉर फिजिशियंस आई हैव 4 ऑप्शंस। मान लो मैंने फिजिशियन 1 P1 चूज की। P1 is in say medical center 1. In medical center 1 there are how many? 3 dentists. So suppose there are 3 dentists here in medical center 1, say dentist 1, dentist 2, dentist 3. Now, so therefore I will have these many choices after choosing P1. Suppose I choose P2. If I choose P2 और मान लो P2 भी जो है ना मेडिकल सेंटर 1 में है और P3 P4 जो है वो मेडिकल सेंटर 2 में है। नाउ P2 इज इन मेडिकल सेंटर 1। मेडिकल सेंटर 1 में 3 डेंटिस्ट है, D1, D2, D3। अब ऐसे ही P3 इज इन मेडिकल सेंटर 2। अगर मैं P3 चूज करती हूँ तो मुझे मेडिकल सेंटर 2 के जो डेंटिस्ट है, ऑफकोर्स अगर D1, D2, D3 आर इन मेडिकल सेंटर 1, देन ऑटोमेटिकली D4, D5, D6 आर इन मेडिकल सेंटर 2। सो ऐसे ही अगर मैं P4 को चूज करती हूँ तो मुझे 3 ऑप्शंस मिलेंगी फॉर डेंटिस्ट। So do you understand here how many cases are we able to create? No matter which physician I choose, I have 4 options for the physician. क्योंकि ये केस 1, केस 2, केस 3, लेकिन आप समझ रहे हो केस 1 में भी अगर आप इसको केस 1, केस 2, केस 3 की तरह ऐड करते हो तो केस 1 में 3 ऑप्शन है फॉर द डेंटिस्ट, केस 2 में 3 ऑप्शन है फॉर द डेंटिस्ट, केस 3 में 3 ऑप्शन है फॉर द डेंटिस्ट, एंड even case 4 has 3 options for the dentist, and that is how you get 4 into 3 this time. This will not be 4 into 6. Now it will be 4 into 3 this time. Okay, so 12 options you have. Okay, we can actually extend this rule as well. So it's not just only up to 2 tuples. We can extend it. You can have numerous number of objects that you have to choose. For example, let's take a case of 3. Like for example, suppose let's go back to the home remodeling question that we did. So suppose you also want to find a lot of kitchen appliances. You are remodeling the house. You have created a new modular kitchen and you want a lot of new latest kitchen appliances. Apart from plumbing and electrical work, now you also require a dealer who can provide to you a lot of kitchen appliances.
they will all be purchased from the same dealer. You don't want to go here and there, okay? You just want one dealer, and you know that your area has 5 dealers. So now, with the dealers D1, D2 till D5, there are how many ways to choose a dealer, a plumber, and an electrician for your remodeling work. All we will be doing is we'll be just this time having a 3-tuple DI, PJ, electrician, say ER. Okay. Now, how many dealers do we have? We have 5 dealers. So 5. If you want to create your cases, again, you can create cases. And when you add up, you will get the same thing. So 5 into how many plumbers did we have? 12. And how many electricians? We had 9. So that is the number of choices that you have. Therefore, what you see from this example is that you can keep on extending this product rule. So product rule for k-tuple. Suppose a set consists of ordered collections of k elements, and there are n1, n2 till nk possible choices for the first, second, third, so on and so forth till kth respectively, kth element respectively. Then there are n1 into n2 into n3, so on and so forth, multiplied by finally nk possible k-tuples. Those many. Again, basically, what are we doing? We are just multiplying. We're just multiplying, okay, the way we did in this example. So this is what I wanted to discuss today. And this is building up our base for the coming up lectures on permutation combinations. Very, very important when it comes to solving probability questions. You have to have a good clarity about permutations and combinations. I'll see you in the next lecture now. Bye-bye.